Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 19th of October 2020 and today's Dawn editorial is about more Iran sanctions, यानी ईरान के ऊपर पाबंदियाँ जो हैं वो ज़्यादा लगा दी हैं. जैसे कि आपके सामने इस वक्त एक स्क्रीन नज़र आ रही है, मैंने क्या किया कि मैंने वर्ड हाईलाइट करके उनके उर्दू के मीनिंग्स लिख दिए और वेरी सून इंशाल्लाह जैसे मेरे पास टाइम जो है थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिलेगा तो मैं वापस इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा और ट्रांसलेशन साथ जैसे मैंने इस दफ़ा ऐड की है. एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड ट्रांसलेशन है कम्प्लीटली और लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश में इसकी जो एडिटोरियल हमारा लिखा है वो है. उसके साथ साथ कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि मैं जब उसको ट्रांसलेट करता हूँ तो आई एम ट्रांसलेटिंग इट लाइक मोस्टली आई एम यूजिंग सम इंग्लिश वर्ड्स, सो आई हैव टू जस्ट मेक इट क्लियर टू ऑल द लिसनर्स कि मैंने अब साथ में जो है उर्दू इसलिए लिखा है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग हैं जिनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता था वो इसको ज़रा आसानी से समझ सकें. As election day in the US draws closer, the Trump administration is tightening the screws of arch nemesis Iran through more sanctions, apparently to please the American president's right-wing voter base and his allies in the Middle East. जैसे जैसे वो कहता है इलेक्शन का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, बज़ाहिर अमेरिकी सदर के दाएं बाजू की वोटर बेस और मशरक़ वस्ती में इनके इत्तेहादियों को खुश करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो अपने अज़ली दुश्मन ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो सख्त कर रही हैं. ये जो आर्क नेमेसिस का मतलब लिखा हुआ है बदतरीन दुश्मन या अज़ली दुश्मन, ड्रॉ क्लोज़र का मतलब होता है बहुत करीब आना और मिडल ईस्ट का मतलब है मशरक़ वस्ती. Some days ago, चंद दिन पहले की अगर बात करें, वाशिंगटन सैंक्शनड 18 इरानियन बैंक्स. वाशिंगटन ने क्या किया कि 18 ईरानी बैंकों को मंजूरी दे दी. while any foreign parties dealing with these entities will also invite American wrath. जबकि इन इदारों के साथ मामलात करने वाला कोई भी गैर मुल्की पार्टनर जो है उसको भी अमेरिका के गुस्सा जो है उसका सामना करना होगा. This is in fact is a recipe to completely strangulate the Iranian economy that is already reeling from international isolation due to American pressure as well as the effects of COVID-19 crisis. दर हकीकत ये ईरानी माशियत का मुकम्मल तौर पे जो है उसको क्लोज़ करने का एक तरीका है, गला घोंटने का एक तरीका है जो कि पहले ही अमेरिकी दबाव की वजह से बैनुल-अक़वामी सेपरेशन, तन्हाई और कोविड-19 के बहरान जो है उसके असरात के साथ वो ऑलरेडी निमट रहा है. While the US Treasury Secretary has said humanitarian transactions with Iran would be exempt, the international financial community will likely not be willing to process these, fearful of earning Washington's ear despite the reassurance. अगरचा अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना जो है उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ इंसान दोस्त मामला जो हैं इससे उसको अस्तशना हासिल होगा, यानी उनके ऊपर अगर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो उसमें ये वाले मामलात शामिल नहीं होंगे. लेकिन आलमी मालियाती बरादरी जो है इस यकीन दहानी के बावजूद वाशिंगटन की जो नाराज़गी है उसके खौफ से इन पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं होगी. The justification for the latest sanctions, ये जो जवाज़ है ताज़ा तरीन पाबंदियों का, ईरान सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, ईरान की अपनी जोहरी सरगर्मियाँ जो हैं और दहशत गर्दाना सरगर्मियों की जो हिमायत है, this quite frankly is a flimsy excuse. इसको अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है ये एक फ्लिम्जी किस्म का बेमानी और छोटा सा ये क्या है जी उज़र है, ये एक्सक्यूज़ है. For while Iran may be playing an expansionist game in its own backyard, the American rhetoric is uncovering, especially when it has no problem with allies that have abysmal human right record. ये जो है जैसे कि मैंने आपको कहा कि अमेरिकी बयानबाजी जो है वो नाकाबिल यकीन है, ख़ास तौर पर जब इसके इन हल्फियों को कोई मसला नहीं है, यानी इसके इन जो साथी जो हैं उनको कोई मसला नहीं है जिनका इंसानी हकूक़ का गैर मामूली रिकॉर्ड है. इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तेहरान हैज़ रिएक्टेड बाय टर्मिंग द अमेरिकन मूव इकोनॉमिक एंड मेडिकल टेररिज्म. तेहरान ने जो है अमेरिकी इक़दाम को माशी और तबी दहशतगर्दी करार देते हुए अपना जो रिएक्शन है वो रिकॉर्ड करवाया है या वो ज़ाहिर किया है. Indeed, independent observers have said US sanctions have badly affected Iran's efforts to deal with the coronavirus pandemic. दर हकीकत आज़ाद मुबसरीन ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों ने कोरोना वायरस के वबाई बीमारी से निमटने के लिए ईरान की कोशिशों को बुरी तरह क्या किया है जी मुतासर किया है.
especially considering that the Islamic Republic has one of the highest case loads in the region. خاص طور پہ اس بات پہ دیکھتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ پر اس حوالے سے اس خطے میں سب سے زیادہ بوجھ ہے. While Donald Trump is trying to please his domestic constituency and Middle Eastern friend by pushing Iran to the wall, it is not اس میں دیکھا جائے کہ اگرچہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ایران کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا کے اپنے مقامی حلقہ انتخاب اور مشرق وسطی کے دوستوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اٹ از ناٹ وائز پالیسی ٹو فردر انکریز دا ٹیمپریچر ان والیٹائل ریجن. لیکن یہ غیر مستحکم خطے میں جو ہے یہ اس طرح کا ٹیمپریچر جو ہے مزید بڑھانا جو ہے یہ کوئی اچھی حکمت عملی یا کوئی ذمہ دار حکمت عملی نہیں ہے. پریزیڈنٹل الیکشنز ان ایران آر ڈیو نیکسٹ ایئر. پریزیڈنٹل الیکشن جو ہے ایران میں وہ اگلے سال متوقع ہے. اینڈ کانسٹنٹ American pressure any propel an ideological hardliner towards the Iranian presidency, one who might have little interest in talking to Washington and prefer fighting the US and its allies in Iraq, Yemen, Syria and elsewhere. مستقل امریکی دباؤ جو ہے ایرانی صدارت کے لیے ایک نظریاتی سخت گیر جماعت کو آگے بڑھا سکتا ہے جس کو واشنگٹن سے گفتگو کرنے میں دلچسپی نہیں ہوگی اور وہ ایران، یمن، شام اور کسی بھی جگہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑنے کو ترجیح دے سکتا ہے. Moreover, تاہم if a new Iranian administration decides to jettison the nuclear deal, اگر کوئی نئی ایرانی انتظامیہ جو ہے وہ جوہری معاہدہ جو ہے اس سے دستبرداری کا فیصلہ کرتی ہے which America unilaterally left in 2018, the US will be principally to blame. جسے امریکہ نے یک طرفہ طور پہ 2018 میں چھوڑ دیا تھا تو امریکہ بنیادی طور پر اس کا رسپانسبل ہوگا، اس کا ذمہ دار ہوگا. To avoid these worst-case scenarios, saner elements within the American establishment need to prevent the rhetoric from escalating. اس بدترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سمجھدار عناصر کو بیان بازی کو بڑھنے سے جو ہے وہ روکنے کی ضرورت ہے. While Mr. Trump makes attempts to win re-election, this cannot be a cost of vitiating the situation further in the Middle East. اگرچہ مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ دوبارہ انتخابات جیتنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ مشرق وسطی میں صورتحال کو مزید خراب کرنے کے بدلے میں نہیں کیا جا سکتا. Biden administration may or may not seek to repair ties with Iran after November 3. بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے 3 نومبر کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوشش کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یعنی ان کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں گے، وہ ابھی تک کیا ہیں جی کنفیوز ہیں. Therefore, Mr. Trump must hold off on his confrontational action vis-a-vis Iran and give diplomacy a chance. لہٰذا مسٹر ٹرمپ کو لازمی ہے کہ وہ ایران سے متعلق اپنے مختلف اقدامات کو روکیں اور سفارتکاری کا ایک موقع دیں. So that was all about today's Dawn editorial. اپنا زیادہ سا خیال رکھیے گا اور پلیز آپ کے جو کمنٹ سیکشن میں ہے اس میں مجھے بتائیں کہ this is the better way to explain all the things or that was the better way which I was using in the past. And please do not forget to subscribe my channel, that is Speak English with Fahad, and try to like the videos اگر آپ کو یہ والا جو ہے میتھڈ پسند آیا، کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کا یہ تھا کہ جناب وہ میں ان کو اردو میں ٹرانسلیشنز نہیں کروا پا رہا. so that's why I did that. اپنا زیادہ سے خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.